एक होते। Yes, at one time there are 360. उन्हीं के तफैल जो ना ये दुनिया कायम है। So it is as a result of the 360 that on earth at one given time that the order is maintained. मुल्तान में एक वली गया रात को, जब उसने देखा ना लोग याशी में लगे हुए हैं, उसने सोचा ये गर्क हो जाएगा, आज ही मुल्तान गर्क हो जाएगा। वो सारा रात बैठ के गुजारी, उसने पता नहीं किस वक्त गर्क हुआ। बोले इसको। There was a saint who went into the city of Multan, Pakistan, and they discovered that the inhabitants of Multan were engaged in unlawful activities and they were really free and there was all sorts of things happening. And then he decided or thought that Multan should no longer exist. And then he just sat down in the city in some dark corner and he started to think, when will it end, when will it end, it should cease to exist tonight. सुबह तक इंतज़ार करता रहा कि पता नहीं किस वक्त ये उलट जाएगा, लेकिन सुबह ही देखा कि कुछ लोग जो है ना वो अल्लाह भी कर रहे हैं। फिर उसने कहा जब अल्लाह करने वाले हैं तो ये अभी उल्टेगा नहीं। He waited until morning and then he discovered that the city still remained intact, nothing happened to it. And what he discovered early in the morning was that there were some people in that city who chanted the name of the Lord. And then he thought to himself, as long as there are some people in this city who chant the name of the Lord, they cannot be destroyed. इसी तरह जब तक वो वली है ना इस दुनिया में तो ये क़यामत नहीं आएगी। In a similar way, as long as the 360 exist in this world and are present amongst us, the end of the world will not occur. तो जो आखिरी वली होगा ना उसका नाम इमाम महदी होगा। इमाम महदी की डेथ के बाद वलायत ख़त्म हो गई। And the last saint who will arrive on this earth, his name will be the Mahdi. And after the Mahdi, the day of judgment and the end of the world will occur. जब वलायत ख़त्म हो गई फिर दुनिया में ख़त्म हो। And after the Mahdi, sainthood, the faculty of sainthood and spiritual guides will no longer exist. Then the third world war and the end of the world and all these things will happen. Saying they will happen, or is it like something that there's possibilities and that we're kind of in, like one of the things that I've heard is that we're being judged now, that if the consciousness on the planet reaches a certain level, that this destruction won't happen, but if it doesn't, then it will, or is there like possibilities, or is it definitely that this destruction? सरकारी पूछ रही कि जो क़यामत का बर्पा होना और जंग अज़ीम 3 और ये तबाही बर्बादी जो होने वाली है, इन्होंने ये भी सुना है कि शायद अल्लाह ताला इस वक्त इम्तिहान ले रहा हो और लोगों को दोबारा मौका दे रहा हो। क्या ये मुमकिन है कि सारी दुनिया के अंदर आलमी तौर पर लोगों का शऊर इतना बेदार हो जाए रूहानियत की तरफ और रुझान अल्लाह की तरफ हो जाए, एक मकाम पर वो पहुँच जाए वो शऊर, फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और ये तबाही नहीं होगी, सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, तबाही तो होगी ना, लेकिन तबाही का मकसद ये होगा ना, अगर इनको पता चल जाए हमने कल मरना तो फिर भी ये याशी तो नहीं छोड़ेंगे ना। Sarkar is saying that it will happen, it will occur, the death and destruction, the end. But what Sarkar also said that if somebody discovers that they are due to die tomorrow, they'll still continue the way they are until it won't really matter to them. इनके सामने लोग मरेंगे, जलेंगे, फिर इनको इबरत होगी, ये खुद भी डूले लंगड़े होंगे, फिर अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे ना। What the higher purpose of all the destruction may be, is that when you see physically yourself that there's so much death and destruction and people are dying and maybe you'll be affected yourself and be incapacitated, and then your mind and all your energies and focus will be towards God. And you'll say, right, let's find God, let's find His love, let's find that refuge. ये तबाही का मकसद है कि इन लोगों का रुख अल्लाह की तरफ। And the purpose of the destruction and the calamities that are due to occur is that the whole of mankind will be led towards thinking about God and finding a path towards Him. जब सारे अल्लाह की तरफ होंगे, सारे अल्लाह करने वाले तो सारे एक ही हो जाएंगे ना। So when the whole of humanity or all people then look towards God, look towards the path which takes towards God and His love, then automatically they'll all become one eventually. That thing will unite them.
लेकिन उस वक्त पर बहुत थोड़े होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। At that point, there has to be very few people left, not as much as there are in the world today. Does, do you believe that this will happen in our lifetime, like some people do? Or is it something that no one truly knows? सरकार ये पूछ रही है कि ये जो वाक़यात होने वाले हैं ये हमारी ज़िंदगी में ही होंगे कि वो ऐसी ये चीज़ है जो हमारे मरने के बाद होगी, दूर होगी। त्यार कोई आंखें देखेंगी, जी सर। ये आंखें देखेंगी, वो नज़दीक है। Shasu said it's very close. You get ready for it because your eyes will see it. सरकार ये पूछ रही है कि कुछ तफसील से आप कुछ और बता सकते हैं इसके मुताबिक? नहीं, हमको इतना पता कि बहुत जल्दी है, चंद सालों में। सरकार said that it's very close, a few years, within a few years time. जिस दिन सैन फ्रांसिस्को डूबेगा सब हो जाएगा, बस अब खत्म होने वाला है सब कुछ। The day you see that San Francisco is submerged underwater, then you must understand that everything is due to happen. वो पहले तो भाई उधर से आएगी, Because the destruction will start from San Francisco. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है ना अल्लाह को सैन फ्रांसिस्को पे। Sarkar said that the anger that God has, most of it is directed at San Francisco. वो औरतों को छोड़ के ना लड़कों को पीछे सब लगे। Sarkar said that it is because of the gay community and the practices there that God is angry at Rafsati the most. तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है And God does not like this. कि मज़क्कर के सारा अटैच। Masculine must be activated with masculine. And you, well, what my feeling was that I believe that love was beyond masculine and feminine, and that if you truly loved someone, that it didn't matter what body their soul was occupied, if it was masculine or feminine. सरकार ये पूछ रही है कि इनका ये ख्याल था कि अगर जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है, इश्क का ताल्लुक है, अगर सच्ची मोहब्बत हो या सच्चा इश्क हो, तो फिर वो चीज़ तो इस चीज़ से बालातर है कि वो रूह किस जिस्म के अंदर है, मर्द हो या औरत हो। वो जो सच्चा इश्क था ना वो ख़त्म हो चुका ना। जी सर। वो कुछ लोग आए हैं, शीरीन, फरहाद, मिर्ज़ा साहब, लैला, मजनू, इनमें सब सच्चा इश्क था, लेकिन वो अकेले भी रहे ना तो बहन भाइयों की तरह रहे ना। बताएंगे सरकार said that truthful love and the truthful ishq that we talk about, and the love that you mentioned, it did exist in previous times. And that they do give examples of couples similar to what we understand as Romeo and Juliet did exist, and their love was so pure that even when they stayed together, they were like brothers and sisters. But that love does not exist anymore. जब वो मरे ना तो उनकी कब्रों से दूध निकले ना, कब्रों से सरकार? दूध निकले, कई कब्रों से दूध निकले ना, जो लोग लेके जाते पीते थे। And when they died and they were buried, and from their graves they saw that there were fountains of milk sprung. People used to take milk from their graves. उनकी सच्ची मोहब्बत थी वो एक वलायत का टुकड़ा थी ना। Because their love was so pure and so truthful, it became a part of sainthood. फिर उसके बाद मिर्ज़ा साहब आए और उनसे फिर गलती हो गई ना आपस में, उसके बाद वो सच्ची मोहब्बत ख़त्म हो गई। Then a person known as Mirza Sahib came, who was also, if you could compare him to Romeo, had that love, and then he made a mistake in the relationship, and at that point that true love ceased to exist. अब अगर तेरी किसी से सच्ची मोहब्बत है ना बहन भाई की तरह, फिर तो ठीक है ना। अगर बहन भाई की तरह नहीं है तो फिर वो सच्ची मोहब्बत नहीं, वो तो नफसानी नफ्स की मोहब्बत है। Now if you love somebody, they're a female or male love each other, they may love each other as a brother or sister, but if they do not love each other as a brother and sister, and then it is love of the senses, it is love of the ego, the love of the self, the love of the basic animal nature inside us. सरकार एक खसूसी तौर पर ये इन्होंने इस मोहब्बत का भी तज़किरा किया है, और एक जो अल्लाह की मोहब्बत है, तो अगर अल्लाह की मोहब्बत सच्ची हो, अल्लाह सच्चे अंदाज में मखलूक से मोहब्बत करता हो, तो ये मुज़क्कर और मुन्नस का मसला ये छोटा सा है उसके सामने, फिर ऐसा क्यों, अल्लाह गुस्सा इतना क्यों है? जहाँ तक अल्लाह की मोहब्बत और मखलूक का मोहब्बत का ताल्लुक है,
जो लोग सैन फ्रांसिस्को में जो हरकतें कर रहे हैं उसको परवाह नहीं होनी चाहिए।